अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ आपका मेज़बान रोहान बिन शम्स एक तो फिर पेश खिदमत है। डॉक्टर दिया साहब आज हमारे साथ दोबारा मौजूद होंगे। मुख्तलिफ कई पिछले हफ्तों से जो आपसे बातचीत हुई है रोमेटोलॉजी के हवाले से, आर्थराइटिस के हवाले से, कुछ पेचीदा ऐसे मसाइल दर्द के हवाले से कि जो सारी ज़िंदगी इंसान के साथ शामिल होते हैं, या कुछ ऐसे कि जो बुढ़ापे के अंदर कई लोगों को आके शामिल हो जाते हैं। कई दूसरे अवामिल की वजह से थायराइड के मसाइल के ऊपर बात हुई, कुछ वज़न के मसाइल पर बात हुई, डायबिटीज़ के और दर्द के लिंक के हवाले से बात हुई। आज भी हमारी कोशिश होगी कि जो कॉमन पेन्स हैं मुख्तलिफ, जैसे कोई छोटी मोटी चोट लग गई है या आगे पीछे चलते हुए कभी आपके मसल में दर्द हो जाता है, कभी कंधे के अंदर, कभी गर्दन के अंदर, इसके हवाले से भी कुछ डॉक्टर दिया साहब से भी पूछें। और यहाँ पे कुछ हमारे साथ दोस्त हैं, कुछ जो पेशेंट्स हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनके क्या मसाइल थे, किस जगह पे उनके ऐसे दर्द है कि वो मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए लेकिन उसका उनको कोई हल अभी तक नहीं मिल पाया है। तो आप लाइव कॉल्स के ज़रिए से अपने सवालात भी आप हमसे पूछ सकते हैं, डॉक्टर दिया साहब से सवाल पूछ सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में कोई वजाहत चाहते हो, कोई ऐसे मसला हो कि जिसके बारे में आपको किसी और तरफ से कोई रहनुमाई ना मिल रही हो, तो ज़रूर आज जो है आप डॉक्टर दिया से कॉल करके उसके हवाले से भी पूछ सकते हैं। बातचीत भी करेंगे, आपसे भी बातचीत करेंगे। और इस्लाम चैनल उर्दू स्काई 766 के ऊपर 66 के ऊपर वर्जन 839 के ऊपर इस्लाम चैनल urdu.tv की जो वेबसाइट पर हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जारी है, इसके ज़रिए से पूरी दुनिया से आप जहाँ से भी देख रहे हो 1 घंटे के लिए दोबारा कुछ बैठ के इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. How are you? Fine. Back for another London trip now? You go all around the world and then come back to London. Thank you very much for your invitation. Alhamdulillah. And Dr. Saab, I know people called from Bradford and Birmingham and different locations and ask about all the pains and everything else. But today I was thinking of asking about common pains first, and then we can inshallah go about rheumatism and arthritis in detail as well. Very common procedure is that somebody gets knocked in somewhere, a little bruise, or fell down upstairs and this and that. Eat paracetamol and just forget about it. So is that the right approach, or they should do something else to ensure that it's not something serious? Yeah, now there is two terms. There is rheumatism, which refer to painful conditions such as for musculoskeletal system, like muscles, tendon, ligaments, bone, nerves, and joints. And it's more than 200 different conditions in rheumatism. And the pain usually goes out. I mean, there is no need treatment. As example, when you sit down for a long time and you want to stand, you feel a little pain in the back. Or if you use your joints, you feel some pain. This is usually without any treatment. Sure. But some condition with arthritis, or what we call rheumatic disease, that one characterized by inflammation. There is hotness, redness, loss of function. There is increase of some like ESR, CRB in the blood. Sure. This means that's the inflammation. Inflammation going on. And this need treatment. And need modified of the diet, because some food exaggerate pain, some food decrease the pain. So any pain, if, as example, now different between rheumatism and orthopedic, rheumatologist and orthopedic. Rheumatologist deals with cases like no need what they call operation. Any surgical requirements are not there. Surgical, yeah. But rheumatologists deal with, as example, joint pain, neck pain. But if there is disc prolapse and need operation, you go to orthopedic. But some disc prolapse, no need operation. Sure. Because some operation, which mean there are side effects of operation, we try to make the operation the last choice. Last choice. So exercise, and there is chiropractic, physiotherapy, laser acupuncture. This will help, but at least help pain to pain relief until he has will do operation or sure. And also, Dr. I think one thing about it, and then we'll speak to Asif, our patient today here as well, and ask about his. I think he's got a frozen shoulder. We'll ask him. But
many people ask about it, that okay, if they go for a treatment once, will this go away forever, or the pain is always going to come back in arthritis situations or joint pains or anything else? Yeah, by my method or in Yes, general? by your method. Yeah, depend on usually my laser acupuncture is what's called low level laser acupuncture. It's supposed to be between 6 to 12 sessions. I try to make it in 1 or 2 because I came from abroad and just 1 day, 2 days. I cannot ask patient to stay 1 week or 2 weeks to make vision. I try to make combination between laser and acupuncture, acupressure, reflexology in the same session, and then alhamdulillah within one session or 2, mashallah, the patient will improve. This first thing. Second thing, the improvement depends on the situation of the example. If the person doing bad things, I mean, is not take care of himself, then the pain will come back. You have to have exercise, you have lifestyle change, and then position, don't after a few minutes will have the pain again, or you carry heavy things. Try prevention and treatment. Prevention and treatment. और वही डॉक्टर साहब जो तस्करा कर रहे हैं कि जो मेथड है लो लेज़र एक्यूपंक्चर का, इसके ज़रिए से जब ये ट्रीटमेंट करते हैं तो उसके बाद भी एहतियात ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप जाके क्रिकेट खेलना शुरू कर दें और समझें कि भाई अब सब सही हो गए लेकिन एहतियात के साथ अगर वो बेहतरी उसके अंदर आती जाएगी तो इंशाल्लाह उसके अंदर बेहतरी होगी। लाइव कॉल्स के ज़रिए से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। खुसूसन कई अफराद ने जो मुझसे भी पूछा और जब प्रोग्राम के बाद भी कई लोगों से मुलाकात होती है, लोग अक्सर पूछते हैं कि ये सर्दियों के अंदर पेन काफ़ी बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा वेदर हुआ, हड्डियों में दर्द होना ओल्ड एज के अंदर, तो ये भी डॉक्टर साहब से पूछते हैं और आपके भी कोई सवाल हैं तो उसके हवाले से कहते हैं। डॉक्टर साहब, वन क्वेश्चन आई ऑफन गेट व्हेन आई गो आउटसाइड ऑल द प्रोग्राम, पीपल हैव स्टार्टेड ऑफ थिंकिंग मी एज अ डॉक्टर एज वेल, आई एम नॉट अ डॉक्टर, यू आर द डॉक्टर, yeah, but often about these muscle pains that go really stiff, especially in cold weather. People who have joint pains, their muscles go really stiff. I've heard about leg muscles in the ankle area or something out in the shoulders as well. So what's the prevention or the cure or the treatment for them? Yeah, the most important thing that maybe they have what they call vitamins or minerals deficiency. So like as example, calcium, vitamin D, magnesium, potassium. If this anyone can cause muscle spasm, can the pain increase. So the first thing, double check there is no deficiency. The other things, the muscle spasm here in the calf, some the patient who may 30s and smoking, very heavy smoker, then maybe they affect the vessels, and then there is no blood flow enough. And when make exercise, he feel like cramps. Okay, we have one caller, so we'll speak to the caller and then we'll discuss this topic in detail as well. Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी कहिए। जी मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, मैं स्कॉटलैंड से बोल रही हूँ। बिल्कुल जी, मुझे पूछना था, मेरी सिस्टर पाकिस्तान में होती हैं। सही। उनके ना 2 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, उनकी दर्द होती है, गर्दन के नीचे से शुरू होती है, सही, पूरे हाथ में आती है, कभी कभी उल्टे में, कभी कभी सीधे में, इतनी ज्यादा शदीद दर्द होती है ना कि वो पैरासीटामोल वगैरह खाते हैं, फर्क पड़ जाता है, लेकिन अब 2 महीने बाद फिर से हुई है। वो समझ नहीं पा रही है कि किस चीज का दर्द है। अच्छा, क्या उनकी एज कितनी होगी? एज उनकी है 43-44 है। और कोई डायबिटीज या कोई ऐसी ब्लड प्रेशर? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कोई ऐसी मसला नहीं है। और थायराइड का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है? जी जी जी, उन्होंने असल में पाकिस्तान होती है तो समझ नहीं पा रही। मैं डॉक्टर, एक तो वो कहती हैं कि इधर के डॉक्टर उनकी समझ में नहीं आते। मेरी जी इंडिया से है वो सिस्टर, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है। सही। तो वो बस परेशान बहुत है, रात भी इतनी पेन थी ना, हाथ में गर्दन के नीचे से शुरू होकर कभी कभी हथेली में आ जाती है, पूरे हाथ में आ जाती है, कभी कभी सीधे में, इस तरह से वो काफी परेशान है। मैं पूछता हूँ बिल्कुल, बस ये पता करें कि वजह क्या हो सकती है। वजह क्या हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, स्कॉटलैंड से आपने कॉल की।
डॉक्टर साहब से हम इसके सवाल को भी पूछते हैं, फिर आगे इसको भी लेकर चलते हैं। डॉक्टर साहब, शी कॉल्ड फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड शी इज़ आस्किंग अबाउट हर सिस्टर हु इज़ 43-44, no diabetes, no thyroid, alhamdulillah, all normal, but she gets pain in her lower neck area, and then it goes spirals down either to the left hand or the right hand, especially during night time. It happened about 2 months ago, went away. 2 months later it's happening again, lower neck, and then it spirals down somewhere in the wrist area on the right side or the left side. So she's worried about what kind of a pain that might be. I think she's sitting on wrong position. Like maybe if she make like the mobile like this, and it's look like 17 to 20 kilos above your head. Right. You are carrying about 17 to 12. You will make like 90 degree. So try to avoid this position, because there is muscle spasm or sometimes disc prolapse. The pain goes down. Goes down. The numbness and these things. And so the first thing, try to avoid reading like this. Down to heavily. Try to like if she can read, or now the disc for writing some what they call like stands come, and you can write like this in the or front rather than going all the way down. Okay. तो डॉक्टर साहब जैसे बता रहे हैं कि ये हो सकता है कि जो इनकी नेक के अंदर डिस्क प्रोलैप्स हो सकता है, मसल स्पैज्म हो सकता है नेक के नीचे, तो वो कह रहे हैं कि अपना सर नीचे रख के बहुत देर तक मोबाइल को यूज़ करना या लिखना इसको ना करें, अपनी बैठने की पोजीशन थोड़ी सी वो चेंज करके रखें, थोड़ा सा सीधा बैठने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें दर्द में बेहतरी आएगी और ये ऐसा ऐसा चलता चला जाएगा। एक और कॉलर है डॉक्टर साहब, विल टेक वन मोर कॉल। वी हैव वन मोर कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी जी कहिए। मुझे बात करनी है कि वो मेरा लेफ्ट लेग है, यहाँ से मुझे नीचे से ऊपर तक आता है। आपकी आवाज़ जैसे कि कोई अंदर में कुछ चलता है ना, ऐसा ऐसा चलता है, कोई जैसे कि कीड़ी मकोड़ा चलते हैं, ऐसा चलता रहता है। और फिर मैं हर रोज वॉक भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता। सही है। हाँ, तो मैं घुटने में भी बहुत पेन है, तो वो लोगों ने मुझसे बोला है कि अभी तो ऑपरेशन करना है, लेकिन वो तो मैं करवाऊंगी, लेकिन जो लेफ्ट लेग है ना उससे मुझे बहुत पेन होता है। सही है। अच्छा, पूरा लेग में ऊपर से भी नीचे पेन होता है, और जैसे कि ऐसे लगता है कि कुछ है ही नहीं। ठीक है। अच्छा, आपको कोई डायबिटीज कोई नहीं, डायबिटीज भी नहीं है, ब्लड प्रेशर भी नहीं है, थायराइड का? हर रोज 1 घंटा वॉक पे जाती हूँ, लेकिन फिर मैं आती हूँ ना जी बहुत पेन रहता है। हाँ। अच्छा, और एज आपकी कितनी है? 72 के करीब है। चलो मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से, मैं इसका पूछता हूँ। बहुत शुक्रिया, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब। शी इज सेइंग दैट शी इज अल्हम्दुलिल्लाह हेल्दी, 72 years of age, no diabetes, no blood pressure, no thyroid. She walks 1 hour every day to keep fit as well. But her left leg has started to hurt now, and she feels like that some people are like some small insects are crawling all the way up and down. So it's like a very numbness feeling and something. From up to down? Up to down. So she's saying that it always feels like that insects are walking through inside, like from up all the way down. So what that might be? What usually after make heavy exercise, the back become the muscle back sometimes become weak, or if you have not enough energy, food enough, then there is like feel a numbness or what they call like needling, needles, due to muscle spasm, like press on the vein, and she feel like this. So when the pain start, just stop. No need to continue. That as example, today 100 meter, and now she feel like this. Tomorrow try 80 meter, and after 2 days 90 meter and 100. Don't continue to walk after any she feel pain. She has to rest. And take some rest and some energy as well. Okay. तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि अगर आप ज़्यादा 1 घंटा वॉक कर रही हैं और उसमें अगर आपको वीकनेस होगी कमर में, तो ये स्पाज़म नीचे की तरफ जाता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए एक तो ये कि वो बता रहे हैं कि 100 मीटर आपने वॉक की, अगर आपके दर्द शुरू हो गया अब वहीं रुक जाएं, रेस्ट करें, वापस आ जाएं, अगले दिन थोड़ी कम वॉक करें, 80 मीटर जैसे वॉक कर लें, आहिस्ता आहिस्ता फिर उसे दोबारा ऊपर 90 मीटर्स या 100 मीटर्स दोबारा लेके जाएँ, लेकिन जैसे ही दर्द हो वहीं पर रुक जाएँ और आराम करें,
اور تھوڑی سی انرجی باڈی کے اندر بڑھائیں تو انشاءاللہ یہ جو آپ بتا رہی ہیں انسیکٹس چلنے کا اور نمنس کا تو یہ کم ہو جائے گا. تو صاحب ون مور کالر دین ویل انشاءاللہ ٹیک اور پیشنٹ از آلسو ویٹنگ ہیئر. سو السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کی آواز میرے خیال میں ان کی آواز ہمارے پاس سے وہ ہو چکی ہے. سو ڈاکٹر صاحب آئی تھنک لیٹس آسک آصف ہیئر. آصف از ہیئر ٹوڈے ود اس. السلام علیکم آصف بھائی. یو اوکے؟ وعلیکم السلام. No, you're not okay, at least. I think I'm not so okay. This is not so this okay. is why I'm here to see the So doctor. tell us about what's the main issue at the moment. Generally, I'm quite active, and I've been playing football for quite some time. So I like to I've been through a lot of pains and injuries, and but over the time, you get to feel them a lot more. Mm-hmm. Okay. Alhamdulillah, everything is okay. But recently, what's happened? Generally, the pains come and then they go away. But I've had a pain on my shoulder. For how long? Maybe for about 4 or 5 months now. 4 or 5 months. For quite some time. I've seen some doctors, GP, and so forth. But it doesn't seem to go away. It's restricting me. Restrict your movement. Yeah, it's restricting my movement. So, and also not just my movement, but also restricting how much I can lift as well. Okay. And hold. And hold, yeah. So for some reason, it's the strength is not there. Yeah, but it's good you stand up. Okay. To show us how the movement of your shoulder when the pain on the right. So it's the right, it's the right arm. Yeah, now it's and pain. there I can feel there's a slight pain restriction. Now. Yes, there is a pain. Now, yeah, okay. And now like this on the back. Yeah, there's little pain. Yeah? Little, yes, Okay. yes. There is some pain. Yes. Sit down and check. I think here the pain here will be. So Dr. Saab, this is about like. Yes, this is exactly what it is. Okay. Now, my method our God create natural substance in our body, like endorphin, serotonin. I try to increase the production of these substance, inshallah. And this is usually in the ear, in the hand, in the feet. Some points for shoulder, some points for knee, some points. Now we concentrate on the shoulder. On the shoulder side, okay. Yes, please. Could you تو hold ڈاکٹر this صاحب نے one? بتایا کہ ان کے ہاتھ کی جو ریسٹرکشن ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے جو جسم میں نیچرل سبسٹنسز ہیں ریکوری کے اللہ تعالیٰ نے جو رکھ دی ہیں ان کو صحیح کرنے کی ڈاکٹر صاحب ایسے کوشش کرتے ہیں کہ کان میں جو اسپیشل ہمارے پوائنٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر لوور لیول لیزر کے ذریعے سے آکوپنکچر جو کرتے ہیں اس سے نیشنل ریکوری کے میتھڈس شروع ہوتے جاتے ہیں اور ان میں بہتری آتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آصف بھائی کا آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے پوائنٹس کی ٹریٹمنٹ بھی کرتے ہیں اور جو ان کا میتھڈ ہوگا اس کے حوالے سے اس کی یہاں پہ جیسے کہ ہم ہر ہفتے کیا کرتے ہیں تو وہ جب تک کر رہے ہیں ہم ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں پھر تاکہ ڈاکٹر صاحب سے سوالات کا سلسلہ بھی ہم جاری رکھ سکیں. تو جی کالر ہمارے ساتھ ہیں. تو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہیے. بیٹے میں مانچسٹر سے فون کر رہی ہوں. میرے نا کان میں سنائی نہیں دیتا. آپ کو کیا آپ نے کہا؟ میرے نا کان میں اپنی زبان کے نا ڈوری ہو گیا. اچھا. تو دوسرا ہے کہ مجھے گھٹنوں کو بہت درد ہے. گھٹنوں میں بہت درد ہے. 7 دفعہ میں کپنگ کرا رہی ہوں. کپنگ کرانی آپ صحیح. خون نکال کے نہ تھا کوئی گھٹنوں کو آرام نہیں آتا ہے. کتنی آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ عمر اتنی کوئی عمر تھوڑی ساری ہے. میری ڈیٹ آف برتھ ہے 30 نومبر 37. 37 ہے. ٹھیک ہو گیا. 70 سے اوپر ہوں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کے اور کوئی ڈائبٹیز شوگر بلڈ پریشر ہے؟ آپ شوگر بلڈ پریشر بھی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے گھر میں سیڑھیاں تو نہیں ہیں کوئی اوپر نیچے؟ جی آپ کے سٹیئرز تو نہیں ہیں گھر میں کوئی اوپر نیچے جانے کی؟ نہیں بیٹے برینڈ فوڈ رہتے ہیں. 2 بیٹی رہتی ہے. صحیح ہے. میں ادھر میں مانچسٹر میں گئی لی ہوں. ٹھیک ہے. چلیں میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی اب دیکھتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ ہم کو آپ نے جو بتائی. اور یہ میرے خیال میں واقعی میں غور طلب امر بھی ہے کہ خصوصاً جو ہمارے کمیونٹی کے وہ افراد ہیں کہ جو اپنے بڑھاپے کے اندر ہیں یا عمر کافی زیادہ ہو چکی ہے اور یہ جو درد ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اپنے لائف سٹائل کو بھی ہم تھوڑا جیسے ڈاکٹر دیا صاحب ہمیشہ تذکرہ کیا کرتے ہیں کہ بہتر رکھ سکیں. ایکسرسائز کو کچھ شامل کریں, کچھ تھوڑا بہت چلنا پھرنا, کچھ ایکٹیویٹیز. ڈاکٹر صاحب نے جیسے پچھلی بار بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اگر آپ بستر سے اٹھ کے 2 قدم چل سکتے ہیں تو پہلے دن 1 قدم چلیے, اگلے دن 2 قدم چلیں, اس سے اگلے دن 3 قدم چلیں کہ آہستہ آہستہ باڈی میں آپ کی ایکسرسائز کی وجہ سے کوئی ایکٹیویٹی ضرور باقی رہے.
تو ہم سوال کا جواب بھی ہماری کالر نے جو کال کی تھی آنٹی نے, ہم ان کا جواب بھی لیں گے. اور جو یہاں پہ آصف بھائی کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی اپنے اسپیسیفک جو ڈاکٹر صاحب کا ایک جو ان کا پورا انسٹرومنٹ ہے, ان کا جو طریقہ کار ہے وہ اس کے تحت چل رہے ہیں. جب تک ہم ایک اور کالر بھی لے لیتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے فون کیا, مجھے ہرنی ہے پیٹ میں. صحیح. جی آج کوئی کافی سال ہو گئے نا, تو آپریشن میں نہیں کراتی کیونکہ میرے سر کا آپریشن ہوا تھا. اچھا. پانی زیادہ ہو گیا تھا سر میں, تو اس کی وجہ سے انہوں نے پائپ کر اندر سے لے کر میدے میں پائپ ڈالا. صحیح ہے. اس وجہ سے میں آپریشن نہیں کراتی. آپریشن نہیں کراتی ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ پیٹ کا مسئلہ ہے, تو وہ بھی کوئی ایسے ہونا چاہیے, مجھے ڈر لگتا ہے کہ صحیح. میں نے ڈاکٹر سے مشورہ بھی لیا ہے, جو بڑا ڈاکٹر ہے اس نے بھی بولا ہے کہ نہیں کرتے, کوئی دوائی ایسی کوئی دیں یا کوئی ٹریٹمنٹ ایسا ہو. تو پھر پلیز مجھے ایسے. میں پوچھتا ہوں آپ کی ایج آپ نے کتنی بتائی عمر؟ تقریباً 70 کے نزدیک ہی ہے. 70 کے قریب ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی بلڈ پریشر, ڈائبٹیز ہے تو بلڈ پریشر نہیں. ڈائبٹیز ہے, ٹھیک ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کوئی ایسے علاج ہو جائے. ویسے میں جو تکلیف رہتی ہے تھوڑی تھوڑی, ہاں ٹھیک ہے. کافی میری جو ہے نا بیلی بٹن کافی ایسے سجی ہوئی ہے. بالکل صحیح ہے. میں پوچھتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے بھی اس کے حوالے سے. بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. ہرنیا کا آپ نے تذکرہ کیا, اور جب تک یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کے جو آپ نے بتایا تھا کہ کانوں کے اور پاؤں میں جو اسپاٹس ہوتے ہیں, اس پہ ڈاکٹر دیا صاحب جو مختلف جگہوں پہ وہ کہہ رہے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب اپنے طریقہ علاج کے تحت جو ان کے پاؤں کے اسپاٹس ہیں, ہمارے یہاں پہ جو پیشنٹ ہیں آصف صاحب, ان کے مختلف پاؤں کے اسپاٹس کے اوپر وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. This is the last point. I can answer the question. صحیح. تو یہ آخری ان کا پوائنٹ ہے, اور یہ اس حوالے سے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لو لیول لیزر آکیوپنکچر کے ذریعے سے جو پن پوائنٹ کر کے ڈاکٹر دیا صاحب اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ان کے شولڈر کا ہاتھ اٹھانے کے اندر, ہاتھ کو پیچھے لے جانے میں ان کی کافی تکلیف تھی. تو اب پوچھتے ہیں جو ہے آصف بھائی, how was it? It was Still, could you stand up? still more to do. Yeah, just the same. Lift your hand. Oh, it's going to the sky now. MashaAllah. Yeah, it's going out a lot more. MashaAllah. That's very good. And no pain, no. No, it's much better. MashaAllah. Yeah. MashaAllah. So was that a frozen shoulder treatment? Yeah, there's in the early stage. In the early stages, yeah. And that's again you treated via with the special pressure points. Free, there's no need to pay. MashaAllah. And don't play football too much now. So Dr. we have 2 minutes to a break, Yeah, and then we are inshallah going to the break. Just one quick question about the knee pain. Auntie from Manchester called, 70 years of age. She has sugar, diabetes, she has blood pressure. She's I think we have 1 minute, so we'll inshallah what we'll do probably after the break, then we'll take this question. تو ایسا ہے کہ آپ اپنے سوالات ہم سے بھیجتے رہیں بریک کے درمیان بھی. اگر آپ کال کر کے سوالات بھیجنا چاہیں تو بھیجتے رہیں. انشاءاللہ after the break we'll start answering them as well. ہمیں ایک چھوٹی سی پروگرام کے درمیان اب بریک لینی ہوگی. بریک کے بعد ڈاکٹر دیا صاحب سے ہمارے یہاں پہ دوبارہ ان سے تعلق ہوگا, ان سے بات چیت ہوگی. کچھ اور ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, اور تذکرہ ہوگا کہ رومیٹولوجی کے حوالے سے, آرتھرائٹس کے حوالے سے, مختلف قسم کے جو پینز ہیں ان کو مینیج کیسے کیا جا سکتا ہے لائف سٹائل چینجز کے ذریعے سے اور ٹریٹمنٹ کے ذریعے سے. تو ایک چھوٹی سی ہم بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں پروگرام صحت زندگی میں. السلام علیکم ناظرین کرام. بریک بعد ایک دفعہ خوش آمدید پروگرام صحت زندگی میں ڈاکٹر ضیاء حسین کے ساتھ. یہاں پہ ہمارے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ضیاء صاحب نے پی ایچ ڈی رومیٹولوجی کے اندر ایکسپرٹ ہیں. کنگس کالج سے انہوں نے پی ایچ ڈی بھی کی. اس کے بعد سے مختلف جدہ کے اندر, استنبول کے اندر, لندن کے اندر ہزاروں افراد کا یہ علاج, یہ جو ان کا طریقہ علاج ہے اپنے لوور پریشر ایکوپنکچر کے ذریعے سے, یہ پوری دنیا کے اندر مشہور معروف ہے. مختلف جگہوں پہ کلینکس کرتے ہیں, مختلف جگہوں پہ آپ کے سامنے بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کے بھی سوالات آ رہے ہیں, ان کے بھی ہم یہاں جوابات لیتے چلے جا رہے ہیں. آصف صاحب جو ہمارے ساتھ یہاں پیشنٹ موجود ہیں, ان کا بھی آپ نے فروزن شولڈر کا دیکھا ہوگا کہ ہمارا تذکرہ ہوا کہ فروزن شولڈر کا کیسا کوئکلی ایک طریقہ علاج ایسا موجود ہے
कि जिसके ज़रिए से अल्लाह ताला ने जो जिस्म के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट्स रखे हैं उन्हीं के इस्तेमाल के ज़रिए से शिफा का इंतज़ाम किया जा सकता है। तो उसके हवाले से भी बातचीत जारी रहेगी। जो दो एक सवाल थे हम वो भी ले लेते हैं, फिर डॉक्टर दया साहब से और भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, दिस क्वेश्चन अबाउट नी कैप प्रॉब्लम, शी वाज 70, sugar and blood pressure, very heavy pain in kneecaps. She's been doing cupping, she was saying the hajama and cupping and everything else, but it's not helping in her pain anymore. So she was asking her, what are the other options or what are the other things that she should be considering now? This is what's called osteoarthritis. Usually after 50 years, we have chance to have arthritis, osteoarthritis more than anyone else. Yeah, this. Mainly if you have more weight, if the weight increase, if you increase 1 kilogram, you have chance 13% to develop osteoarthritis. Also try to avoid stairs. Because the stairs will make more pressure on the joints. As example, like you weight 70 kilo, like 210 if you go stairs. The pressure. Yeah, pressure on really the joints. Now the first thing, avoid stairs. The second thing, reduce weight. And exercise. There is a special exercise for people who has now this early osteoarthritis. Right, okay. And with these things inshallah it will start. तो डॉक्टर साहब ने जैसे तज़किरा किया है कि सीढ़ियाँ, स्टेयर्स जो हैं उनको आप पहली बात है कि अवॉइड करें और कोशिश ये करें कि वेट अगर ज़्यादा है तो उसको भी कंट्रोल में करें, और फिर ये कि लाइफस्टाइल चेंजेस जैसे डॉक्टर साहब ने तज़किरा किया तो उसको भी करते हैं। एक और कॉलर है सर, डॉक्टर साहब विल टेक वन मोर कॉल इंशाल्लाह, विल आस्क द क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कहिए। हाँ, वो मेरी मिसेज है ना, उसके टांग में, लेग में दर्द है ना। कौन सी, राइट या लेफ्ट? हाँ जी, तो 3-4 हफ्ते हुए हैं, अभी तक आराम नहीं आया। वो डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने कहा पैरासिटामोल जो है ना वो टेक कर ले। अच्छा। तो 3-4 बार, पर वो भी लिए, अब कोई अभी तक आराम नहीं आया। अच्छा। तो उसके बारे में पूछा था कि वो किस लिए है वो दर्द और क्या करना चाहिए। तो कहाँ आप बता रहे हैं, घुटने के नीचे दर्द है उनके या पूरी टांग के अंदर है? हाँ जी, सिर्फ घुटने के नीचे। सिर्फ घुटने के नीचे? हाँ, घुटने के नीचे दर्द है। तो फिर आप ऊपर कूला जो होता है ना वहाँ पर चला जाता है। सही है, सही है। आप अच्छा, और क्या इनका कोई डायबिटीज, कोई ब्लड प्रेशर? ना, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है, और कोई बीमारी नहीं। और कोई बीमारी नहीं है। अच्छा, और वजन भी कंट्रोल में है, नॉर्मल वजन है या? हाँ जी, अब वजन बिल्कुल कंट्रोल है, नॉर्मल है। नॉर्मल वजन है, ठीक है, ठीक है। चले मैं पूछता हूँ इसका इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। कोई और कॉलर हैं या हम फिर पहले जवाब दे रहे हैं? चलें पहले हम जवाब दे देते हैं, उसके बाद फिर करते हैं। डॉक्टर साहब, ही वाज कॉलिंग अबाउट हिज वाइफ who has a very severe pain for the last 3 weeks in her leg. Leg or knee? Leg. So it starts below the knee and then it goes all the way up to her hip and the lower back side as well. She went to the GP, they said take paracetamol, it will go away. When she eats paracetamol, it goes away, then it comes back again. No blood pressure, no diabetes, weight under control as well. So what can be some steps for her? How old is she? I think 40s he mentioned. 40s, yeah. Now the most important to ask next time about the weight for everyone. Yeah, he was saying weight is under control, average weight. Okay. Now I think what she has, mainly if the pain from up to down, now it's mainly something in the back. Back, there is like exercise, heavy exercise, or maybe heavy weight, carrying heavy weight, or standing a long time. And when she wants to stand up, she feels pain. Or the most important now, don't sit down more than 30 minutes. 30 minutes. Every 30 minutes, just quick exercise and come back within seconds. Fair enough. Fair enough. And then try, if you want to carry things, try to carry it in a healthy way, not like bend and pick it up. Yeah, try to down. Down. And this mainly double check about her vitamins and minerals. Will exaggerate the pain if there is any deficiency of
and one of those. that comes in a blood test. So he Yeah, needs blood to get test. a blood Yeah, test blood to test get for minerals and this vitamins. minerals. Okay. And this paracetamol and diclofenac, and all this what they call temporary. Short term. And try to avoid it for a long time because it affects kidney. You know, the most dangerous for the kidney, number 1, diabetes, number 2, analgesic. So try to avoid analgesic as much as possible. Okay. डॉक्टर साहब जैसे तस्करा करें कि जो पाँव में नीचे से ऊपर की तरफ दर्द जाता है, ये लोअर बैक से इसका ताल्लुक हो सकता है. लोअर बैक का मतलब ये बता रहे हैं कि उसके एक्सरसाइज भी ऐसे रखें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट बैठें, फिर उठें, वॉक करें, फिर आएँ, थोड़ा इंतज़ाम कर लें. वेट्स को बहुत ज़्यादा कैरी ना करें, कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त ना करें, थोड़ा सा आराम करें और लोअर बैक के अंदर अपने इसके एक्सरसाइजेस जो हैं वो करते रहें. उसके अलावा मिनरल्स और विटामिन्स का चेक करवाएं, ब्लड टेस्ट कराएं और देखें कि कोई बॉडी में ऐसी डेफिशिएंसी ना हो कि जिसकी वजह से ये पेन बढ़ता चला जा रहा हो. एक कॉलर और हैं, उनसे भी बात करते हैं, फिर हम आमिर हमा साहब यहाँ जो मौजूद हैं इनसे भी गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. जी कहिए. जी मैं आगे भी फोन किया था, जो अर्निया के बारे में किया था. जी जी. तो वो मैं वो ही हूँ, तो आप प्लीज मुझे आर्थराइटिस भी है, आर्थराइटिस घुटनों में दर्द ऐसे हैं. ठीक है. ये भी मैं बताना था, तो अर्निया की प्लीज मुझे जवाब देना. बिल्कुल चलें, मैं पूछता हूँ बिल्कुल इसका मैं बिल्कुल पूछ लेना चाहिए. डॉक्टर साहब, she called about hernia earlier. I think I mentioned, and obviously it's a more inflamed disease, but with hernia she has arthritis and knee pain as well, and she's avoiding operation for hernia as well because she had a previous operation in her head where she got water stored in her head and they put in a pipe to get the water down into her stomach. So she's worried about arthritis, knee pain and hernia. What can be some... arthritis in just joint or... in joints. In one joints. joint or separate joint? No, she was saying all the knee joints. Knee joints only? Yes, yeah. With the knee pain, obviously. But I don't know, she tried to avoid hernia because she has to be very careful about the complication of hernia if not operated. Maybe some strangulated hernia and the effect will be emergency, or try to follow her doctor advice and surgery. If it has to happen, they should go for it then. Yeah. And then try to reduce weight because I told you before the weight very important for knee pain. Welcome. Other things, some foods, she has to be on healthy diet. Try to avoid milk products for some while and meat, chicken. Try to eat fish unless if she's sensitive or allergic, and then try to as much as she can vegetables and fruits, except sometimes like citrus, like to avoid lemon, orange, peas, beans in the vegetables. Some vegetable increase. She can test. See what works best. Today more pain. Maybe yesterday I eat something. The pain will go and come back. Come back as well. Okay. So डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक तो ये कि आप हर्निया का जो आपको डॉक्टर अगर सर्जरी का कह रहे हैं तो उस पर फ़ौरन तवज्जो दें, क्योंकि हर्निया का ऑपरेशन अगर ज़रूरी है तो उसको कराएं कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी ना आ जाए. दूसरे जो दर्द के हवाले से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फ़िश को खाएं ज़्यादा. अगर आप फ़िश से एलर्जिक नहीं हैं तो मछली ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि उससे विटामिन आपके बॉडी में आए. मीट और चिकन को अवॉइड करें. मीट और चिकन की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ने का ख़तरा होता है ज़रूर, तो मीट और चिकन को आप अवॉइड करें और कोशिश करें कि वेजिटेबल और फल खाएं. और फलों में भी डॉक्टर साहब ने कहा कि सिट्रस जो होता है, लेमन है या ऑरेंज है, इसको अगर आप अवॉइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपकी बॉडी के अंदर इंशाल्लाह रिकवरी का ये सिस्टम बढ़ता चला जाए. अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला आपको शिफा कामला भी अता करे. वी ऑल्सो हैव वन ब्रदर है, आमिर साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं. इनसे भी कुछ पूछते हैं कि इनके प्रॉब्लम क्या हैं और उस पर फिर डॉक्टर साहब से उनके हवाले से मशवरा करते हैं. सो आमिर साहब, टेल अस अबाउट द मेन इशू एट द मोमेंट, द पेन दैट यू आर हैविंग एज द मेन इशू. Unfortunately, because of working at a desk all day, so I've got the regular problems associated with the desk work, which is the neck-like stiffness, and also my lower back is, I've got lower back pains as well. Sometimes upper back as well, but it's all to do with sitting for a long time. Sitting for a long time. It's just, unfortunately, that's just the way life is nowadays. So it's just a computer sitting and just doing the work, and so it's just
probably the case for most people. And Dr. Saab, I think he was mentioning, does it go down to your legs Yes, as well? so sometimes with my lower back pain, it goes down to my legs, it goes down to my feet. I've had MRIs, I've had many different things, and everything has come back fine. So I don't really know at this moment in time what the problem is. It's nothing serious, I know that for sure. But it's a nickel, it just goes on and on. Okay. We have one caller, Dr. Saab, and then we'll probably come back to and they ask the examination as well. تو ایک کالر پہلے لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ آپ کی دعائیں, آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں ڈاکٹر سے گل کرنا چاہتا ہوں جی, میری وائف جی ہے اس کی کمر میں کافی تکلیف رہنی ہے, اس میں ایکس رے وغیرہ ایم آر آئی بھی ہوئے تو اس کو کہنا کہ اسپائن کی 3 جگہوں نیک, مڈل پارٹ, لوور پارٹ جی ہے اس میں گیپ ہوئی گئے, اس کی کافی تکلیف رہنی, شولڈر نہیں بھی, شولڈر جی موومنٹ بڑا ریسٹرکٹڈ ہے. ویسے پین مینجمنٹ انہیں پیسے تھی تو وہ کہنے کہ اس لیے جب ایکسرسائز وغیرہ کرانے کی کوشش کی تھی, انہیں کافی اس کی تکلیف ہونی تھی, انہیں آیا یہ نہیں ٹھیک ہوئی تھی, اس میں واسطے ایکسرسائز تو بیسکلی پین کلر وغیرہ کھانی ہے. اس کے علاوہ اس میں جی ہسٹریکٹمی ہوئی ہے, HRT نیچے دے دی ہے, پوری شولڈر بھی پرابلم ہو جائے. ہوں اس طرح ہو گئی ہے کہ پرابلم کہ کبھی اس کی ذرا اپنا فریز ہو جانی, باڈی فریز ہو جانی, ٹھنڈی ہو جانی, کسی نے ذرا اس گرمائش ہی فیل ہونی, اس طرح بہت پینک کرنی, گلے کی سائڈ نے گلے کی پتہ لگنا جس طرح نائف شارپ پین ہونی ہے, اس طرح کوئی ایکسرسائز کوئی کام نہیں کر سکتی, بڑی پریشان ہے. کوئی شوگر تو نہیں ہے, ڈائبٹیز شوگر؟ شوگر بھی ہے, ڈائبٹیز بھی ہے, تھائرائڈ بھی ہے, الرجی وغیرہ بھی ہے, بہت ساری ایسی پرابلم ہیں. ویٹ بھی تھوڑا جا زیادہ ہے, 2-4 اسٹون زیادہ, 2-4 اسٹون, انجائنا وغیرہ بھی ہے, انجائنا بھی ہے, اسٹروک کی سسپیشن بھی کوئی ہے, وہ کافی عرصے نکالا ہے. الحمدللہ نہ آیا, کوئی ڈیمیج نہیں ہویا, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے. اور اس طریقے نے اور کافی پریشان رہنی ہے, الرجی وغیرہ بھی ہے, اس کی باہر نہیں جا سکنی, سمیلا وغیرہ ہونی اتنی زیادہ ہوگی کہ کار بھی اس کی تکلیف ہونی. اللہ بہتر کرے. کوئی اگر علاج ہے ڈاکٹر کو کوئی علاج کر سکن تو بڑی مہربانی ہوسی. بالکل کس طریقے نہ ہو سکنا علاج. ٹھیک ہے, میں بالکل آپ پیچھے ویسے ڈیٹیل تو آپ پیچھے لے سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے, یہاں پہ بھی میں اس کا سوال کا جواب دیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی کانٹیکٹ ڈیٹیلس آپ کو پیچھے سے ویسے وہ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے اس کا بھی جواب لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, he described about his wife plenty of issues. She is a bit overweight. She has issues with thyroid, diabetic as well. But the main issue she's saying is that they had X-rays and MRIs done, and the doctors are telling that there is a gap between her spine in neck, in middle, and the lower area. And for that, she has immense pain all across the body. Especially, she's saying on the side of her neck, there's like a sharp knife cutting kind of a pain into her neck. Then she obviously gets shoulders frozen for some time, and then they start moving again. And the other thing, she's saying that her body goes very cold very often. It just goes very cold all of a sudden, and then all the heat comes starting back in the body as well. So that's the kind of a plethora of issues she's describing, and asking if what the immediate treatment might be, and then what the long-term solution might be. I think this is she has many things like disc prolapse in the neck, cervical and lumbar, and she has maybe I think signs of fibromyalgia because she has pain here, and she, I think also she has stressful life. Try her husband here or آپ ابھی لائن پہ ہیں؟ No, yeah. Just ask him to be patient with your wife because she's under pressure, maybe from the children, from the. Try to. She need more assurance. Need to be on healthy diet, lifestyle. Sure. Aerobic, like also hydrotherapy, swimming, very good for her. Because this swimming pool is this most important
for patient with joint pain and Joint muscle pains and issues. So this is the first thing. Second thing, in low level laser will help here inshallah a lot. طبعا she has also thyroid, she has also thyroid and diabetes, she has numbness in many things. So try to avoid cold weather, and then as I told you before, the fish very good for her except if allergic. Okay. تو یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کہ اسٹریس کم کریں, اور جو کہہ رہے تھے کہ اگر آپ شوہر بات کریں تو بیگم کو اسٹریس نہ دیں. آپ بالکل بھی اسٹریس اگر ہیں تو کسی بھی حوالے سے اگر ذہنی تناؤ ہے یا کوئی پریشانی ہے تو کوشش کریں کہ اس سے نکلیں, تھوڑی لائف سٹائل کو بہتر کریں. مچھلی سے اگر الرجک نہیں ہے تو مچھلی کھانے کی کوشش کریں. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہائیڈرولک جو پانی سے اورینٹیڈ ایکسرسائزز ہوتی ہیں, جیسے سوئمنگ ہے یا پانی میں جا کے تھوڑا بہت ہاتھ پیر چلانا کوشش کرنا, اس کی کوشش کریں کہ اس سے پوری باڈی کے اوپر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. جو ڈاکٹر صاحب کی ٹریٹمنٹ ہے بتا رہے ہیں یہ بھی کافی ہیلپ فل ہے, تو یہ بھی کنسیڈر آپ ضرور کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کے حوالے سے. اور دوسری یہ کہ ہیلدی ڈائٹ استعمال کرنا شروع کریں کہ جلد سے جلد جتنا کھانا آپ کا بہتر ہوگا, باقی تمام چیزیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ اسی سے کنیکٹڈ ہیں. اور پھر یہ کہ بہت زیادہ پریشر کسی چیز پہ لمبے عرصے تک بیٹھنا, جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 30 منٹ سے زیادہ بیٹھنا نہیں, چلنا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی رکھنا, تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ کریں اور انشاءاللہ اس کے اندر بہتری آتی چلی جائے گی. تو ہم لوگ جو ہمارے یہاں پہ مریض صاحب ہیں, ہمارے جو پیشنٹ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. انس کو اگر میں بلا سکوں جو وقار میں, ہمارے دوست انس کو اندر بھیجیے گا. ان کا ایک ایگزامینیشن ہم لوگ چھوٹا سا وہ کر لیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو باڈی کے جو ٹانگوں کے اندر اسٹرینتھ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا ہم نوٹ کر سکیں کہ کتنا یہ اپنے باڈی کے اپنی ٹانگوں کے اندر اسٹرینتھ ہے, اور یہ اوپر لے کے جا سکتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کے بعد ہم دیکھیں. تو جی انس آپ آئیے گا, ہماری مدد کریں. اب آپ ان کے ٹانگوں پہ یہ ان کا نام کاٹ دیں اگر آپ اس میں ابھی پین مینجمنٹ پہ وقار بھائی, تو یہ دیکھیں آپ کے وہ کیسے یہ بالکل یہ ٹانگیں اپنی وہ ابھی پوری اٹھا نہیں پا رہے ہیں ابھی. Thank you. Come back after. ابھی آپ 2 منٹ انس بھائی ویٹ کریں یہاں پہ, تو یہ پھر ٹریٹمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فرق کتنا پڑتا ہے. Big bend and see how the pain now start. Yeah. Okay. Sit down. دو چیزیں آپ نے دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے, ایک تو یہ کہ ان کی ٹانگ پہ ہاتھ رکھے گا کہ پریشر کتنا یہ اوپر اٹھاتے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ انس بھائی نے وہ کیا. یہ اب تھوڑا سا اس کی گردن کی ٹریٹمنٹ آپ نے دیکھا کہ گردن کے کن پوائنٹس کے اندر ان کا درد ہے. نیچے اپنے ہاتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایکسرسائز کرنے میں جیسے ہم لوگ اکثر نیچے ہاتھ لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہاتھ بھی نیچے نہیں لے کے جا پا رہے. اور جیسے عامر صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہ بڑا کامن ایشو ہے, جو بیٹھ کے کام کرتے ہیں پورا دن, ڈیسک آفس ورکرز ہیں, ڈیسک ورکرز ہوتے ہیں, ان کا یہ بڑا کامن سے ایشو ہو جاتا ہے کہ لوور بیک میں ایسا پین شروع ہوتا ہے جو انسان کی ریسٹرکشن کر دیتا ہے, اس کی موومنٹ کے اندر درد ہو جاتا ہے. بلکہ عامر صاحب تذکرہ کرتے ہیں کہ آفس سے چھٹی تک انہیں لینا پڑی, اتنا ان کو اس تکلیف کے اندر ان کی یہ تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں آفس سے بھی چھٹی لینا پڑی ہے. ڈاکٹر دیا جو ہیں یہ لوور لیول لیزر کے ذریعے سے جو اکوپنکچر کرتے ہیں, اور جیسے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا تھا کہ باڈی کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ایسے کچھ پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں کہ جن پہ اگر پریشر ڈالا جائے تو اس کے اندر سے ہی ایسے منرلز کا. I told you before that ear she has all the body points. All the body points. And this is what they call low level laser. We try to increase production of endorphin and serotonin in our body. Now it's supposed to be between 6 to 12 sessions. I try to make it in one session. So I hope you will benefit from Inshallah, this. Inshallah. Just I'm doing some points, not all the points, because no time. بالکل. اینڈوفرین اور سیروٹونن جو ہمارے باڈی کے اندر ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے سے ریکوری باڈی کے اندر ہوتی ہے, جس کے ذریعے سے درد کم ہوتا ہے. مختلف جگہوں کے اندر اگر کوئی بھی جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہو تو ریکوری ان مٹیریلز کے ذریعے سے, ان منرلز کے ذریعے سے, ایلیمنٹس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کوششیں کرتے ہیں کہ انہی جو ہمارے انسانی اجزاء یہ شامل ہیں جسم کے اندر, ان کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے. اور کان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پوائنٹس رکھے ہیں کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان پوائنٹس کے ذریعے سے کان کے اندر جب ان پہ پریشر ڈالا جاتا ہے تو وہ بڑھ جاتے ہیں, اور اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ اس درد کا علاج بھی ہوتا ہے, اس درد کے اندر
बेहतरी भी आती चली जाती है। तो आपने देखा होगा कि अनस ने, हमारे आके जो दोस्त हैं, उन्होंने इनकी टांगों पे हाथ रखे, जब शुरू में देखा था कि कितना प्रेशर है इनकी टांगों में, कितनी ताकत से ऊपर उठा सकते हैं। तो अभी जब इंशाल्लाह ट्रीटमेंट के बाद दोबारा एक एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कि कैसे उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है, कहाँ उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है, कितना उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। लेज़र के ज़रिए से वो आप देख रहे हैं। आमिर भाई, यू फीलिंग ओके, राइट? Yep. Alhamdulillah, Alhamdulillah, he's okay, Alhamdulillah, he's smiling, so it's all good. So ये जो ट्रीटमेंट के तरीक़ेकार है, इसके ज़रिए से डॉक्टर साहब मुख्तलिफ जो आपने बताया था पहले भी रूमेटोलॉजी के हवाले से जितने दर्द हैं, खुसूसन ऐसे दर्द कि जो समझें कि आर्थराइटिस से लिंक्ड हों या इन्फ्लेमेशन से लिंक्ड हों, या ऐसे जोड़ों के अर्क़ निसा का दर्द है या जोड़ों का दर्द है, हड्डियों के दर्द हैं, मसल स्पाज़म हैं, इनके अंदर ये ट्रीटमेंट काफ़ी बेहतर होती चली जाती है। तो हमें एक छोटी सी ब्रेक भी लेनी है। ये ट्रीटमेंट यहाँ पे जारी है, इसके मनाज़िर आप देखते चले जाना है। और जैसे आपको हमने पहले भी बताया था कि इस ट्रीटमेंट के ज़रिए से डॉक्टर साहब की कोशिश ये होती है कि कम सेशंस के अंदर, बहुत ज़्यादा सेशंस नहीं बल्कि कम सेशंस के अंदर इसको एक बेहतर से बेहतर एक तरीके की तरफ लेके जाया जा सके, कोई भी दर्द हो उसका इलाज निकाला जा सके। तो एक छोटी सी हमें ब्रेक भी लेनी है, तो हम लोग ब्रेक भी लेंगे। ये यहाँ पे सेशन जारी रहेगा इंशाल्लाह। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर दोबारा एग्जामिनेशन भी करेंगे, देखेंगे कि कहाँ आमिर साहब की ट्रीटमेंट पहुँची है, और फिर इनसे भी पूछेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि इनका तजर्बा कैसा रहा। एक छोटी सी हम लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के अंदर। आमिर साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, डॉक्टर दिया साहब के साथ, जो एक उनके लोअर बैक के प्रॉब्लम के हवाले से उन्हें कहा था कि उसमें पेन है, डेस्क वर्कर, ऑफिस वर्कर्स के जो नॉर्मली हो जाता है। तो उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट की, वो आपने मनाज़र उसके कुछ देखे। तो अब जो एग्जामिनेशन है, कुछ उनसे भी पूछते हैं, उसका फिर एग्जामिनेशन है जो वो भी। तो अनस भाई आके पहले अगर आप देख सकें, डॉक्टर साहब टेल अस अबाउट द प्रेशर ऑन द लेग्स। Because I work on right side only. Better now? Yeah, it's Much stronger, much stronger. And then next cervical, retro. You see, mashallah now. ज़्यादा Nearly touch बिल्कुल, his ear to अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। And then bending. Bend as well. नीचे कितना जा सकते हैं आप कोशिश करें। ये Oh, भी बड़ा mashallah, है। you touch अल्हम्दुलिल्लाह। the floor, mashallah. Yes, mashallah. फ्लोर पे पहुंच गए। आमिर भाई, getting better now, Yes, alhamdulillah, with the definitely back? much better. Much better Definitely now, much better, alhamdulillah. yes. So Big this is difference. something, and I think this is a very common issue with everyone who works in an In an office office. environment or anything. I mainly like this sitting, Yeah. try to raise, sit down like up, Yeah. not like this. And also, you know, this new concept of standing desks. Many people have Yeah, seen. yeah, I this. find that. Is it But, helpful or? It's helpful, but they try to not stand long time also. I try to move around, not like this. All day. You mean just try to move little bit, not just sitting Very for stable, 1 hour or straight. half an. Yeah, you have to move like this, behind. अच्छा ना, यही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इसके साथ साथ, डॉक्टर साहब, one thing I think Amir साहब asked a good question about is that after this session, how much should be a prevention and care to ensure that it doesn't happen again, as in terms of getting pain? Should they make lifestyle changes as well? Yeah, and the this is other very things? important life change for every patient. Because, as example, if I repair something and then there's something from this side, I cannot finish my work. If you have water here, coming from here and coming from there and coming, if you not stop these, it will continue. You cannot solve the problem. Now you have the lifestyle, healthy lifestyle, very important. Eating habits. Exercise, swimming, food also. About the food, try to avoid fried. Grilled is much better for every food. Also avoid meat, alcohol, smoking. Sitting position, standing position, try to be all natural, not I mean like this one or like this. Yeah. This is very bad sitting. Yeah. Supposed to we try
to find comfortable chair and comfortable bed. Try to early morning start working not until some people until 10 o'clock or 11 o'clock sleeping because they all the night wake up. This is the lifestyle. It's very supposed common to be asleep in the night and work in the morning early, and much active exercise, active walking. No, it's I think, to be honest, our audience, Asian people, you're telling everything that we do. So it's very tough. We wake up at 11 a.m. in the morning on Sunday and then eat halwa puri and biryani. But Dr. Saab also, and I think three separate things if you want to kind of divide it into. Young people exercising and everything is slightly easier, swimming, exercising, this and that. But once you cross, say, 40s or 50s, then exercise becomes a bit tougher in terms of people. So what are the common exercises? Is it just about walking? Is it just about doing little activity? Yeah, actually now there is what they call some exercise can do it while you are sitting. And then like bicycle, like avoid the treadmill. Because treadmill is cause pain, mainly for all knees, knee pain. Swimming very good. For even the old age can even just under the water try to move. No need to learn do proper swimming. Just remain underwater. Just remain moving joints because more easier in the water than above. And as I told you now, you told me young and old. So young and old, and then the middle age, especially people who are like working in front of a desk all day. They get very minimum time, like 5 or 10 minutes every day to do some proper exercise. So what should be the things in 5 also 10 sitting. minutes? I told you before, sitting, don't sit long time. Try to every hour, just I'm sorry, every half an hour. 30 minutes. Every 30 minutes, just rest about 10 seconds, moving around, and then sit down again. Don't sit for long time, 1 hour, 2 hours. Even you are traveling, try to move from your seat in the airplane or anything as well. In the car or in the bus, try to move around. Don't sit down more than half an hour. And Ahmed, I think if I ask you, I think with these some examples of exercise and everything else, is that you normally were doing before, or is something that you were not able to do properly so that this pain developed? I have been exercising for the last 3 or 4 years, but for the last 3 weeks I've not been able to exercise because of the problems that I was having. But which then causes that you do feel down because you're used to exercising, and then if you can't do it for a few weeks, then you feel down because of that as well. So yeah, so it's so hopefully inshallah now you're back up and running. And don't I mean, stressful life, try to avoid, because it's very important. Be happy. Yeah, be happy all the time. Because nothing, if you are sad, nothing will happen. I mean, there's no solve. You don't solve the problem if you are sad. Try to be happy all the time. ये मेन चीज़ है, खुश रहें, सारे मसले आधे से आधे वैसे ही ख़त्म होंगे। और कोई आपके सवालात हों, आप ज़रूर कॉल करके हमसे यहाँ पे डॉक्टर दिया साहब से गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई सवालात आपके हों तो वो भी पूछ सकते हैं। आपने देखा कि उनकी टांगों के प्रेशर के ऊपर भी फ़र्क पड़ा, लोअर बैक के ऊपर जो बेंड किया हमें साहब ने, वो भी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर फ़र्क पड़ा, और नेक की जो मूवमेंट आती है उसके अंदर भी फ़र्क पड़ता है। और ये तमाम जो एक होलिस्टिक जो डॉक्टर दिया साहब हमेशा लफ्ज़ यूज़ करते हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट यही होती है कि सिर्फ दवाओं पे या केमिकल की दवाएं खाते हैं, पैरासीटामोल खाते रहें, उसका लिवर पे असर हो, मुख्तलिफ बॉडी के अज़ा पे असर हो, उससे बेहतर ये है कि लाइफस्टाइल थोड़ा बहुत चेंज करें, थोड़े बहुत अल्टरनेटिव मेडिसिन के जो हमारे तरीक़ेकार हैं उनको भी तरीके इस्तेमाल किया जा सके, और कोशिश यही रखी जा सके कि दर्द को अवॉइड करने के बजाय उसको प्रिवेंट किया जा सके, कि आप अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ऐसी चेंजेस ला सकें कि उसको लॉन्ग टर्म के लिए प्रिवेंट कर सकें। डॉक्टर साहब, okay, if about this specific treatment, because mashallah you've done a lot of research and PhD and you've written about it at the King's University as well. How effective is it
on different people? Is it as effective on children as it is on older people, or is there a difference in terms of effectiveness? Actually, we are not doing for children. Not children. And less than 12 years. Less than 12 years old. We cannot do it. And it depends on the, I told you, the lifestyle of the patient. Mashallah, some patient improve from the first session. Some patient after 2 or 3 sessions need, as example, if there is little pain, different from pain everywhere, and also lifestyle change. As I told you before, diet and after the treatment, it's not enough just make therapy and go away. And do you have to again. do, yeah, you have to stick with some regular. Yeah. And Dr. Tell us about your experience, because you, alhamdulillah, go to, you obviously have clinic in Jeddah, and you do it in Istanbul, and you do it in London as well. Generally, these kind of problems and pains, do you see that they are increasing in our Muslim community, or people are getting more healthier? What's the general trend in your view? Actually, what I'm facing, the main problem is overweight. Overweight. That's because of al-Baik, I think. A lot of al-Baik. Okay, we have one caller, then we'll inshallah discuss this in detail as well. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. जी कहिए. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. जी पूछिए, सवाल पूछिए. मैं पूछना सी, मेरा शोल्डर लेफ्ट साइड जो है, मेरा शोल्डर वो फ्रोजन है 5 साल हो. तो मैं वो पाकिस्तान गई सी, उत्थे दसिया, पता लगा कादे आजम अस्पताल है, तो मैं दसिया सी. फिर मैं इत्थे आई तो फिजियो भेजने रहे 2-3 दफा, पर मी राम नहीं सना, ऊपर नीचे हो जानी, बाजू पीछे नहीं सही जानी, तो दर्द नहीं जा गया. तो फिर 3 टीके लाए, 3 के 3 लाई सकने दर्द जाने पर, उसने तो महीना आराम अपना फिर नहीं अपना. वो पूछना था डॉक्टर साहब से भाई कि इसमें क्या मसला है, भाई दर्द नहीं जा गया. तो ये लेफ्ट साइड है, तो वो पीछे जो फरी है ना, हड्डी है उसकी जगह, उसने जगह से वो बहुत ज्यादा दर्द करता है. हाँ, तो फिर मैं यूट्यूब पर भी देख रही हूँ, एक्सरसाइज है जो मैं करनी जानी है, 12 ऊपर चली जानी है, दर्द नहीं स्टिल जाएंगे. तो आपको कोई शुगर डायबिटीज तो नहीं है कोई? जी शुगर भी है. शुगर भी है, अच्छा. और कोई थायराइड का मसला कोई? वो थोड़ा आया, थायराइड ना, पर इतनी ज्यादा नहीं है, अभी स्टार्ट हो गया. वो सब्जी कुन्नी जी साडा में अंदर पता लगना जिस तरह मांस चिरिया होना. ठीक है. तो कपड़ा लगाया जैसे टेक लां जैसे, तो फिर वो तकलीफ होनी है. अच्छा. और वेट, आपका वेट तो ज्यादा था? वेट पहले तो थोड़ा ज्यादा था, 12 स्टोन से अभी 11 स्टोन में कम किया. ठीक है. और एज आपकी, उम्र कितनी है आपकी तकरीबन? उम्र 64 के करीब है. ठीक है. और ये आपने सिर्फ लेफ्ट शोल्डर में? और लेफ्ट शोल्डर में. तो वैसे मेरी लत जो है वो फ्लैक्स नीट है, मेरा वो पैदाइशी है. अच्छा. और उसमें काफी तकलीफ होनी है, पर वो लगे असेसमेंट करना, प्रेशर नहीं करने भाई, शुगर है कितना ठीक हुए हैं, तो वो जाने पहले चले थे, वो लगे भाई ठीक हो गया, कंफर्टेबल हो. ठीक हो गया. मैं पूछता हूँ, बंद करनी है फिर मैं करना है. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, फिर इसका भी जवाब देते हैं इंशाल्लाह ताला. डॉक्टर साहब, शी इज़ 65 years of age, 11 stone is her weight. She's lost recently, she was 12 or 13, now she's 11. Very minor thyroid issue, a bit of diabetic as well, very severe pain in her shoulder, and it's not going up or down. She had some treatment back in Pakistan. She went to a hospital there in Pakistan as well, and they said it's a frozen shoulder. They gave some something along that side, but now it's back, and it's really troubling her at the moment. So what can be some immediate solutions for her? Actually, this is the immediate low level laser, as you see the shoulder previous patient. But I think her blood sugar is not controlled. No, I think it's more than 8. The HA1/C, because usually I found this one of the complication of diabetes, frozen shoulder, which uncontrolled blood sugar. The first thing, try to control her blood sugar. Right. Try to make exercise for frozen shoulder until if she can come to see me in the next month. And there is a special exercise, as example here, a pain, and then try to put mark line
and then try to increase little slowly. bit. This is one of the exercises she has to do. As I told you before, I told her also about control blood sugar. कंट्रोल ब्लड शुगर, ठीक है जी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक तो है कि शुगर पे कंट्रोल करें, अगर बहुत ज़्यादा है उसको बिल्कुल कंट्रोल में लेके आएँ, वो आपके लिए सबसे आसानी है। फिर डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि लो लेवल लेज़र की ट्रीटमेंट जो है ये भी हेल्पफुल है। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने एक्सरसाइज जो बता रहे हैं कि अगर आप एक लकीर लगा लें दीवार पे और रोज़ाना कोशिश किया करें कि हाथ को उस लकीर से ऊपर लेके जाएँ, थोड़ा सा वहाँ लेके जाएँ, फिर देखें कहाँ पहुँचे, अगले दिन 10 बार ऊपर लेके जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता जितना बढ़ाती चली जाएंगी इंशाल्लाह आपके इस शोल्डर के अंदर भी उसके हवाले से बेहतरी आती चली जाएगी। तो एक और कॉलर ले लेते हैं हम, फिर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी। अच्छा मैंने पूछनी है, मेरा ना आर्थराइटिस भी है मुझे। सही। मेरे 10 को साल हुए ने। ठीक जी, तो मनु स्पाइन प्रॉब्लम है। स्पाइन में? हाँ जी, मैं कोई 8-9 साल हुए ने। 8-9 साल से स्पाइन डैमेज है मेरी, तो मैं टैबलेट लेती हूँ डॉक्टर स्पेशलिस्ट वास्ते। अच्छा, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं, शुगर नहीं है। ब्लड प्रेशर? नो। और वेट आपका एवरेज है, ज़्यादा है? वेट है ये 90 kg। अच्छा, और एज आपकी कितनी होगी? एज 70 प्लस हो गई है। ठीक है, मैं पूछता हूँ डॉक्टर साहब से इसके हवाले से भी। डॉक्टर साहब 10 years arthritis, common in her knees and joints, spine problem, and she's taking tablets for spine problem. She's had severe pain in the spine and been taking tablets for the last 8 or 9 years now, getting on tablets. No sugar or diabetic. She's about 70 years of age and roughly about 90 kilos in her weight as well. So she's asking mainly about how to control and manage arthritis and also kind of decrease the spine pain. Now, the treatment she's taking, I think she has very maybe a lot of side effects because it affects kidney, it affects stomach, it affects even could increase blood pressure. So try to avoid. This is not solution if she has a painkiller. But if she has treatment, okay, for arthritis, like if she has rheumatoid arthritis and taking what they call modified drugs, like methotrexate or plaquenil or salazopirine or corticosteroid. This is treatment, not like analgesic, like diclofenac or paracetamol or something. So the first thing, try to see if this is analgesic, try to avoid it. Second thing, try to change her lifestyle. Mainly now we have weight and other thing about diet. Try to avoid fatty things, meat, chicken, to eat fish and vegetables, fruits as much as you can. And don't try to avoid stairs. Stairs too much. Very important. Don't sit down for a long time. Exercise, swimming is very good for her. And I think also low level laser will help her. Will help her also. So ये चीज़ें कुछ बताएं कि एक तो डाइट कंट्रोल करें, फिश अगर एलर्जिक नहीं है तो कोशिश करें मछली खाएं, चिकन और मीट्स को अवॉइड करें, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस उसके हवाले से करें, स्टेयर्स सीढ़ियों को अवॉइड करें जितना आप कर सकती हैं, और इसके अलावा वही कि ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग जिस चीज़ का तज़किरा किया डॉक्टर साहब ने, स्ट्रेस को भी डॉक्टर साहब मुख्तलिफ उसके हवाले से कहते हैं कि अवॉइड करें इंशाल्लाह। और जो दवाएं बहुत ज़्यादा टैबलेट्स हैं उनको भी अगर आप अवॉइड करें, अल्टरनेटिव मेथड्स हैं ये जो डॉक्टर साहब की ट्रीटमेंट है इस हवाले से भी वो रखें कि ये तमाम चीज़ें आपकी साइड इफ़ेक्ट्स जो हों बॉडी पे वो कम से कम हो सकें। सो वी हैव वन मोर कॉलर, वील टेक इंशाल्लाह एंड वील कंटिन्यू डिस्कशन एज़ वेल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी कहिए। डॉक्टर दिया से बात करें। जी कहिए, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब। हेलो। जी जी डॉक्टर साहब सुन रहे हैं, आप बताइए। मुझे पार्किंसन है, हाथ कांपते हैं। ठीक।
डायबिटीज हो, डायबिटिक सही, हार्ट बाईपास ऑपरेशन हुआ है, हार्ट बाईपास सही। एज आपकी कितनी है? 80 माशाल्लाह। और आपका वेट कितना होगा? 70 है, ठीक है। और पेन आपको कोई दर्द कोई अभी? शोल्डर में, लेफ्ट शोल्डर में पेन है, ठीक है ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ इंशाल्लाह। और पार्किंसन आपने बताया राइट हाथों में, राइट साइड पे? हाँ दोनों में है, दोनों, ठीक है ठीक है। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो he is alhamdulillah 80 years of age, 70 kilos, so not heavily on the weight side. He's diabetic. He has Parkinson in his both hands, right and left as well. But the issue he has, he also had a heart bypass a few years ago. But the left shoulder is really troubling him at the moment. It's really getting painful. Frozen shoulder. So it's a frozen shoulder as well. One of the complications, as mentioned before, uncontrolled blood sugar. And osteoarthritis. Now she has, because every patient or person after 56 develop osteoarthritis, but sometimes without symptoms. If there is no, subhanallah, in the Quran, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ. Every patient after 50 or 60, now there is fluid, reduce the fluid in the joints, and the joints, and become very hard to. So I try to keep our joints free movement and exercise. This is how we try to keep our joint, take care of ourselves. Also, she has arthritis or spine pain or Parkinson, neck Parkinson pain. in both hands. No pain in the no back. arthritis, only the shoulder. So it's a sugar condition. That sugar condition most important, and inshallah will help her this condition. Alhamdulillah. Okay, so we're getting to the very end. It's the last 2-3 minutes of the show, inshallah. So tell us about. I think we discussed a lot of things, but general, if you would give advice to everyone, irrespective of their age and everything else. You mentioned about the obesity and al-baik issues and everything else. What are the general advice that people can take on board and then inshallah improve? About 60 to 70% of patients with rheumatoid arthritis has previous attack of emotional distress. So also fibromyalgia is very important, painful conditions which usually caused by stress. One of the most important factor for fibromyalgia is stress. Every time she's sensitive to everything, any one speaks something and then or become sad. She want everything 100%, and try to cry, try to. I mean, for that I ask her to be please happy and peaceful life. Don't worry too much. Leave it to Allah. Leave it to Allah. Subhanallah, الحديث صلى الله عليه وسلم لا تغضب 3 times. He said, this is very important advice. Don't be stressed, don't be anxiety. And this will inshallah help everyone. Jazakallah khair, Dr. Saab, you're just getting to the very end. Thank you very much for joining us on the show, Ahmed Saab. Thank you again. I hope it was a better experience now getting through the pain. नाज़रीन किराम, डॉक्टर दिया साहब के साथ आपने हमारा एक और रूमेटोलॉजी के हवाले से, दर्द के हवाले से ये प्रोग्राम देखा। बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने हदीस के हवाले से जो आखिर में नसीहत की है, जिस कदर ज़िंदगी के अंदर इंसान स्ट्रेस फ्री हो, खुशियाँ भरे, उस कदर आसानियाँ बढ़ती चली जाती हैं। अपना भी ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।